Viewers, Dr. Manmohan Singh, often described as the accidental Prime Minister, stands as a towering figure in India's modern history. Not for the politics that enveloped his tenure, but for the profound economic transformations he championed. Viewers, his legacy, rich with both accolades and criticisms, will be judged through several lenses, each offering unique insights into his impact on India. Viewers, Dr. Manmohan Singh's journey from an unassuming scholar to the architect of India's economic liberalization is nothing short of legendary. His vision was clear: to steer India away from the shackles of a license Raj towards a more open global economy. The economic reforms initiated under his guidance as finance minister were pivotal in reshaping India's economic landscape. Viewers, as Prime Minister, his resolve was tested with the India-US Civil Nuclear Agreement, known as the 123 Agreement. To bolster India's energy security, Dr. Singh risked his government's fate to push through this deal, showing determination of steel. His legacy here might be debated in terms of strategic gains versus domestic political costs, but the long-term benefits in technology and energy cooperation cannot be understated, viewers. Manmohan Singh's personal traits, humility, integrity, and a scholarly approach to governance will also play a significant role in how history remembers him. Some would argue that his approach was often seen as lacking the charisma or political astuteness of his contemporaries. Yet it was this very nature that perhaps allowed him to navigate complex reforms with less personal ego. His scholarly demeanor will be celebrated for bringing a level of dignity and intellect to Indian politics. Viewers, Dr. Manmohan Singh's legacy will be a subject of both celebration and scrutiny. Perhaps history will judge him as a visionary who, despite political constraints, managed to alter the course of India's economy, leaving a legacy that future leaders continue to build upon. Narasimha said, "No, you go and get dressed up and come for the swearing-in ceremony." So that's how I became the finance minister. People say I was accidental prime minister. I was also accidental finance minister. Well, I honestly believe that history will be kinder to me than the contemporary media or the politics, or for that matter, the opposition parties in parliament. That is what Prime Minister Manmohan Singh had said when he was asked particular questions. Let's open this up. Shahid Siddiqui, former Rajya Sabha Member of Parliament, editor Nai Dunya. Vinod Agnihotri here with me in the studio, senior journalist. Mr. Raja Gopalan, senior journalist. Dr. Harshvardhan Tripathi is also with us. And Dr. Ranganathan completes the panel, needs no introduction. Shahid Siddiqui, I want to begin by asking you, how would you like to remember Dr. Manmohan Singh? Look, I don't agree that he was an accidental finance minister or accidental prime minister. He was at a juncture when Indian economy was in doldrums, it was in crisis. He was the choice of not only the Indian prime minister, he was the choice of the global, economic forums and institutions which thought that if India has to be brought out of this difficult situation, then he is the best man to do it, and he did it. And he did it so gently. I mean, bringing such reforms, such changes would have created havoc. But he did it in such a nice way, such a gentle way, that it did not disturb Indian economy or Indian society at all, and that he was able to do. And even as Prime Minister, he was the first choice of not only the Congress, but the 24 parties or 28 parties which came together to form UPA. It was not an easy choice. There couldn't have been a better man to lead this coalition of different ideologies and different leaders and their egos. He was a man without any ego. He was a man who was humble. He was a man who was always
extremely positive and gentle, but he was never weak. He was a very firm, strong man. I knew him from my college days in the university. At that time, he was advisor to the economic finance ministry, but he used to come to Delhi school to meet his old colleagues, and accidentally, we students who used to visit the school, we met him and then interacted with him, and he loved to talk to young people even at that time. And later on, I was in the AICC minority cell chairman, he was the economic cell chairman, and our offices were adjacent to each other, and I used to, take his advice constantly, especially on the affairs of the minorities, and he always gave a very positive, and he was very pragmatic. He didn't have any fixed ideology. His strength was that he did not go with any ideology of left or right. He used to choose what was best at that point of time for the country, for the people, and that was again his strength. So I believe that he is one of the finest leaders the world has seen in the 21st century, and if India stands today tall, it is because of a man like Manmohan Singh. Okay, sir, stay with us. विनोद अग्निहोत्री, आप इतने ग्लोइंग ट्रिब्यूट्स आ रहे हैं सर देश और दुनिया से, आप कैसे याद करेंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह को? नहीं, मैं भी जो ग्लोइंग ट्रिब्यूट्स हैं उनके साथ अपने को संबद्ध करूंगा. मुझे उनके साथ कई बार ट्रैवल करने का मौका भी मिला, और अदरवाइज भी मैं पार्लियामेंट कवर करता था, कांग्रेस पार्टी कवर करता था, पीएमओ, तो काफ़ी नज़दीक से मैं जानता हूँ. मनमोहन सिंह के बारे में कोई उनको अंडररेटेड कहता है, कोई ओवररेटेड कहता है, लेकिन मुझे लगता है वो प्रॉपर्ली रेटेड थे. और मैं सहमत हूँ शाहिद भाई की इस बात से कि नाइदर ही वाज एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर नॉर ही वाज एक्सीडेंटल. यहाँ मैं एक मिनट आपको बस रोक दूं, क्योंकि शाहिद सिद्दीकी जी ने भी बोला कि एक्सीडेंटल क्यों कह रहे हैं. ये उन्होंने ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, किताब तो छोड़ दीजिए, लेकिन उन्होंने ही बोला था, नॉट ओनली एम आई एन एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, आई एम ऑल्सो द एक्सीडेंटल फाइनेंस मिनिस्टर. और उसके बाद उन्होंने स्टोरी बताई थी, तो इसीलिए a lot of people don't get the context, तो इस व्यूअर्स को ऐसा ना लगे कि हम बोल रहे हैं. नहीं, वो तो संजय बारू की किताब है जो उनके मीडिया एडवाइजर थे, और उसके बाद से उनके लिए टर्म शुरू हुआ, वो बात है. लेकिन हमारा अपना जो एनालिसिस है उसके हिसाब से, जब वो फाइनेंस मिनिस्टर बनाए गए तब वो आरबीआई के गवर्नर रह चुके थे, और तमाम उनकी ख्याति थी. भारत के नोट करेंसी पर उनके साइन होते थे, तो वो एक इकोनॉमिस्ट के रूप में जाने जाते थे, और उनको बनाया नरसिम्हा राव ने, सेलेक्ट किया. ही वाज सिलेक्टेड फाइनेंस मिनिस्टर एंड ही वाज आल्सो सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर आल्सो. वो भी सिलेक्टेड थे. बाद में वो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के रूप में आए जब 2009 में जो मैंडेट मिला, बड़ा मैंडेट मिला यूपीए को, उसमें मनमोहन सिंह के लिए भी मैंडेट था. ठीक है, क्योंकि जो न्यूक्लियर डील उन्होंने की, जो उन्होंने तमाम सारी स्कीम्स वो लेके आए अपने फर्स्ट टेन्योर में, उनका जो असर पड़ा, उसकी वजह से यूपीए का वोट बढ़ा और यूपीए को एक बढ़त मिली अपने टैली में. ये अलग बात है. अभी शाहिद भाई की एक बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूं. उन्होंने कहा कि वो कांग्रेस की चॉइस नहीं थी, सबकी चॉइस थे. नहीं, चॉइस तो कांग्रेस की ही थे और सोनिया गांधी की चॉइस थे. बाद में सबने एक्सेप्ट किया, क्योंकि सोनिया गांधी तो इलेक्ट हो गई थी पार्लियामेंट्री पार्टी की लीडर, और उनके नाम की चिट्ठी भी राष्ट्रपति भवन में तैयार हो गई थी. लेकिन जब सोनिया गांधी ने उनका नाम प्रपोज किया सेंट्रल हॉल की उस बैठक में, और उसके बाद फिर यूपीए ने उनको अपना लीडर माना, तो वो चॉइस तो कांग्रेस की ही थे. दूसरी बात यह है कि इंटरनेशनली उनका कितना सम्मान था, इसको तो उनके साथ जो लोग विदेश यात्राओं पर गए हैं वो जानते हैं. मैंने खुद कई बार देखा है उनका सम्मान जो है इंटरनेशनली. खास करके मैं जिक्र करना चाहूंगा 2012 का G20 का जो सम्मेलन था जो मैक्सिको में हुआ, उसमें मैं उनके साथ था, और किस तरह उनको ग्रीट किया है सारे वर्ल्ड लीडर्स ने. और सबका एक ही सवाल था. मैक्सिको के जो प्रेसिडेंट थे उस समय, वो सिर्फ 2 हेड ऑफ स्टेट्स को लेने पोर्च तक आए थे, बाकी सबको प्रोटोकॉल मिनिस्टर रिसीव किया था. एक चाइनीज प्रेसिडेंट एंड मनमोहन सिंह देन इंडियन प्राइम मिनिस्टर. क्यों कि ये दोनों नेता ऐसे थे जिन्होंने ग्लोबल मेल्टडाउन का सफलता से मुकाबला किया था. वो उनकी बहुत बड़ी ख्याति थी. और न्यूक्लियर डील तो उनका उसी तरह से उनके खाते में है जैसे पोखरण 1, पोखरण 2, और उसका एक्सटेंशन था न्यूक्लियर डील, जिसने हमको रिकॉग्नाइज किया एज ए न्यूक्लियर पावर, एज ए न्यूक्लियर स्टेट. उसके पहले तो हम बिना लाइसेंस की बंदूक लिए घूम रहे थे. हमारे ऊपर सैंक्शंस थी, हमारे ऊपर जो है, हमको न्यूक्लियर पावर हम थे, लेकिन माना नहीं जा रहा था, खास करके जो न्यूक्लियर क्लब के मेंबर्स थे. तो उन्होंने न्यूक्लियर क्लब की मेंबरशिप भी दिलाई. ये आपने इंपॉर्टेंट बात कही, क्योंकि उस समय जो रिजॉल्व उन्होंने दिखाया, ही ऑलमोस्ट रेस्ट हिज गवर्नमेंट. डॉक्टर रंगनाथन,
People are asking, saying, writing, how will history judge Dr. Singh? What would you say? I would say history would, or certainly I would judge him as pure gold, glittering, shimmering, at the same time, soft and malleable. And, you know, I think, Pranesh, this is a strange debate to be in, because I'll be very honest with you. Our culture always says do not speak or be critical of the dead, especially, when so little time has passed. Fair enough, absolutely, and I don't want to be that. Having said that, we ourselves need to decide how objective we need to be in order to assess Dr. Manmohan Singh. The silver lining in this everything is, of course, every man has a failing and everyone has it. But the silver lining is that one can be very complimentary to Dr. Manmohan Singh, as I will be in a second. At the same time, can be critical as well. That is why he was a special man, because he was in charge of two separate domains. And, one can be absolutely brilliant in one domain and not so good at the other, thereby eliciting response that can be complimentary as well as critical. So if I may, at the risk of offending a few, be rightly so very complimentary to one of his domains, and at the same time be a little bit critical of the domain that he certainly was accidental, which was prime ministership. But coming to his forte, which was as an economist, this country owes him a lot. I have to say this. When he entered the fray in 1990, our foreign exchange reserves were 3 billion, little bit above 3 billion. And when he left in 2014, they were 300 billion. He dragged us out of a hole, literally a hole, and he pulled us into the right direction. So the nation is grateful, and I think even our current Prime Minister acknowledges that. We are all, in one sense, reaping the rewards that Dr. Manmohan Singh implemented. There might be a lot of other people who would say that, look, his economic reforms that he heralded were also because of Mr. P.V. Narasimha Rao, fair enough, and also World Bank, IMF, fair enough. But he was the man on the ground who actually fructified them. So a huge credit goes to them, goes to him as well. As far as economy is concerned, pure gold. Academics, unbelievable. A wrangler means a double first from Cambridge, very rare. A real scholar, academic, so all very well. And I think if one were to leave it at that, I would like to remember him as that, because I think his foray into the prime ministership leaves a lot to be desired. As I said, today is possibly not the time to talk about it. But a few lacuna remain. For example, the air chief was on record saying that after 26/11, he implored Manmohan Singh to strike terror hideouts in Pakistan, and he wasn't given permission. We know what happened. Baluchistan was included in Sharm el-Sheikh. We know a lot of other things that happened. For example, communal violence bill was about to be passed, where that was blatantly, bigoted, communal, and anti-Hindu. So many other things. But as I said, the crowning glory, at least in that department, was his nuclear deal that he did. But I would like to remember him so much more as an economist who was an expert in that field, real expert, and not so much, in fact, not very much at all in his secondary field as prime ministership. And as far as his honesty is concerned, let me say this again, that he was certainly as honest as Prime Minister Modi is. That is to say that personally, there is absolutely no stigma on their personal integrity and honesty, but both of them have looked the other way and allowed corruption to prosper. Okay. I don't know how this will be received, but you are entitled to your views and opinions. Mr. Rajagopalan, in your interactions with Dr. Singh and over the years, the man that you saw, what would you like to tell our viewers? Pranesh, very, very interesting things are there. He's a good listener. He absorbs the things quickly and understands the politics. And as you say, how would you rate? I rate 60% good man, 40% not bad man, but I would say 40% so-so. Because having served the Indian Parliament, Dr. Manmohan Singh has never been elected to Lok Sabha.
Second thing, he has been only in Rajya Sabha. Second, why he was called accidental prime minister. I would like to explain from my understanding, having known Mr. Kalam very well, Dr. Kalam, Abdul Kalam very well, he rejected the name of Madam Sonia Gandhi. That is why after Dr. Subramanian Swamy presented a case, the case became very sensational. Suddenly, Madam Sonia Gandhi appointed Dr. Manmohan Singh. That is why he says he's an accidental prime minister. Second, very important, as I said, he's a good listener. I remember I was present at Atal Bihari Vajpayee's residence when Dr. Manmohan Singh called on him as a prime minister, and it's a courtesy that the outgoing prime minister is paid a call by the incoming prime minister. Interestingly, 1 hour the conversation went, Pranesh. After 1 month, when I met Mr. Atal Bihari Vajpayee, I asked him what was the conversation like in Central Hall of Parliament. Mr. Vajpayee explained, मैंने बहुत कुछ समझाया, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी में कभी आलाइस का लेना नहीं है डॉक्टर. He was speaking from experience. He was speaking from experience. He spoke from experience and said he was bitten very badly by George Fernandez Tekelka, this coffin case scam. Therefore, don't bring any sensational persons in the defense ministry because you are bound to get into problems. That is why I say he's a good listener. Second thing, for 10 years of Dr. Singh and 10 years of Narendra Modi, if you compare, I come to this judgment that as Dr. Ranganathan stated, corruption ridden in 2014, before 14 and after 9. So therefore he was made as a very, very bad. Many painters painted him in a wrong brush. He was a gentleman, but he allowed 2G, CWG, coal scam, everything. And he was also to be questioned. His secretary, Harish Gupta, was jailed for the corruption charges. So therefore, there are minus and plus points. Right. Coming to the last point, I would like to say that he is very simple. He asked for a taxi after he demitted office. And second thing, he had also been very, very, very courageous to say on the day of the nuclear deal, 1, 2, 3 was to be tabled in the parliament. When Samajwadi Party, the cash scam happened, 3 crore rupees cash was thrown in the parliament. At that time, he offered to resign. That Sanjay Baru in his memoirs has also complimented Prime Minister Dr. Manmohan Singh that he offered to resign. So these are all certain thoughts, but conclusion, he is no more. We have to praise him and he's a good listener. Of course, I stand by still 60% good, 40% bad. Okay. हर्षवर्धन जी, इतना सब कुछ कहा जा रहा है, लिखा गया है डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में. अगर आपसे कोई कहे कि क्या व्यक्तित्व था उनका और क्या लेगेसी छोड़ गए, तो क्या कहेंगे आप? देखिए प्रणेश, सबसे पहले तो मैं बहुत विनम्रता से श्रद्धांजलि दूंगा. और शानदार शख्सियत इस मायने में थे कि 1971 से 2019 तक, ये छोटा समय नहीं होता है, वो लगातार सत्ता का हिस्सा रहे. तो या कोई बहुत काबिल होगा या कोई बहुत ज्यादा चापलूस होगा, तभी वो इतना सत्ता में रह सकता है. काबिल वो थे, इसको मैं मानता हूं. दूसरा पहलू, वो जो जिनके साथ उन्होंने काम किया वो बताएंगे. लेकिन हम अगर इसको शुरुआत यहां से करें कि क्या कांग्रेस पार्टी ने इस देश के आर्थिक सुधारों को 6 महीने धकेल दिया था. मनमोहन सिंह जी के व्यक्तित्व की प्रशंसा करनी चाहिए. वैसे भी हम हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, तो आलोचना उस तरह से तो नहीं हो सकती. वो किसी और दिन डिबेट में होगा तो बहुत डिस्कस करेंगे, अच्छे से डिस्कस करेंगे. आप सोचिए, ये दुर्भाग्य नहीं है कि हम लोग कभी पीवी नरसिम्हा राव की चर्चा नहीं करते हैं, लेकिन उसको अलग से डिस्कस करेंगे, वो एक अलग डिबेट है. जब जुलाई 1991 फर्स्ट बजट जब उन्होंने पेश किया था, प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे, वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे, यूजीसी चेयरमैन से उनको लाके यहां कर दिया. अब ये भी एक बड़ा सवाल है कि इकोनॉमिक्स का इतना बड़ा एक्सपर्ट उनको यूजीसी में क्यों चेयरमैन के तौर पर डाला गया था? एजुकेशन से तो कुछ लेना देना नहीं था. ये सवाल कभी कभी मन में आने चाहिए. लेकिन चंद्रशेखर जी, जिनके ऊपर हमेशा ये बात कही जाती है और हम जर्नलिस्ट भी कहते हैं कि उनके समय में सोना गिरवी रखने की नौबत आ गई थी. अरे भाई, जो आदमी 6 महीने भी सरकार भी नहीं रहा, उसके ऊपर सारे आरोप, उससे पहले राजीव गांधी की सरकार, और ये सारे लोग जो है
ये 1971 में कॉमर्स मिनिस्ट्री के एडवाइजर से लेकर और 1991 में फाइनेंस मिनिस्टर बनने के पहले तक सारे पदों पर रह चुके थे। प्लानिंग कमीशन के डेप्यूटी चेयरमैन, बहुत शानदार अर्थशास्त्री थे। दुनिया के बड़े बड़े संस्थानों में उनके लिखे हुए रिसर्च पेपर, उनकी कही हुई बातें, वो सब मानी जाती थी। लेकिन कितने लोग इस देश में जानते हैं कि चंद्रशेखर जी ने एक कमेटी बनाई थी जिसका काम ही था कि उस वक्त जो देश की आर्थिक दशा है उसको सुधारना। उसके लिए किसको उन्होंने चुना? एक शानदार अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को, दूसरे शानदार अर्थशास्त्री मोंटेक सिंह अहलुवालिया को। और कमाल की बात यह है कि वो फुल बजट भी चंद्रशेखर पेश नहीं कर पाए। वो जो मनमोहन सिंह का पेपर था, मोंटेक सिंह अहलुवालिया का पेपर था, वो प्रेजेंट हो पाता उससे पहले कांग्रेस ने चंद्रशेखर जी की सरकार गिरा दी। तो आप पहले इसको यहां से शुरू करेंगे तब शायद आपको समझ में आएगा। तो वो इतने अच्छे अर्थशास्त्री थे, तो चाहे जो हो हर कोई उनको अपने साथ रखना चाहता था। और आज के समय में हम लोग चाहे ओपनिंग अप ऑफ मार्केट की बात कर रहे हैं, आज हम चाहे बात कर रहे हैं कि सिलेंडर के लिए किसी एमपी का जुगाड़ नहीं लगाना पता। मैंने खुद अपने घर में टेलीफोन के लिए इलाहाबाद में कितनी मारामारी की है मैं ही जानता हूं, वो मनमोहन सिंह की देन है। आज जितने तरह के काम आप कर रहे हैं बहुत मस्त होकर, बहुत मजे में, तो उस सारे मौज मस्ती मजा जो देश भारत कर रहा है उसका श्रेय अगर किसी एक व्यक्ति को जाता है तो मनमोहन सिंह। और उनको वो करने का अगर किसी ने अधिकार दिया तो वो थे पीवी नरसिम्हा राव, जिनका जिक्र बहुत कम होता है। ये बात मुझे हमेशा सालती है और आज के दिन उसको जरूर मैं कहना चाहता हूं। उनको विनम्रता पूर्वक सम्मान करता हूं मनमोहन सिंह जी को, लेकिन उनसे एक चीज और सीखिए, वो बॉसेज यस मैन थे। हमेशा जो है उसके लिए काम कितने अच्छे से करना, और यह भी एक खूबी हो सकती है। आप किसी काम में 100% एक्सपर्ट हो वो अलग बात है, लेकिन आपका बॉस जो चाहता है उसमें 100% एक्सपर्ट क्या है क्या? इसलिए फाइनेंस मिनिस्टर तक मनमोहन सिंह को मैं प्रणाम करता हूं, लेकिन जैसे ही प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह आते हैं मुझे बड़ा आश्चर्य होता है जब यह कहा जाता है कि उनके ऊपर कोई मैंडेट मिला। वो तो 99 में अकेला चुनाव लड़े थे, विजय कुमार मल्होत्रा से हार गए थे दिल्ली से। लेकिन जो 2009 का मैंडेट था वो मनमोहन सिंह जी की पॉलिसी पे नहीं था प्रणेश। वो 2008 में 60,000 करोड़ की कर्ज माफी पी चिदम्बरम के रहते, जो सोनिया गांधी जी की योजना थी, जिसको मैं मानता हूं कि इस देश के बैंकों का भट्ठा बिठाने की शुरुआत वहां से शुरू हुई थी, वहां से शुरू हुआ था ये। और उससे उबरने में भी टाइम लगा। बहुत लोग बहुत सी बातें करते हैं, लेकिन यह ध्यान में रखना चाहिए। और मैं फिर कह रहा हूं, बहुत अच्छे व्यक्ति थे, शानदार स्कॉलर थे, जिस बैकग्राउंड से आए थे उनको सब पता था, इसलिए इकोनॉमिक स्कीम्स को बहुत अच्छे से लागू करते थे। डीबीटी हो, आधार हो, जितने तरह की चीजें आज आप सोचते हैं वो सब उन्होंने किया। उसको अटल बिहारी वाजपेयी ने आगे बढ़ाया, नरेंद्र मोदी ने बहुत शानदार तरीके से किया। लेकिन जब खुद वो प्रधानमंत्री बने तो शायद फिर से नेहरूवादी समाजवादी नीतियों को सोनिया गांधी ने ऐसे लाद दिया जिसकी वजह से उनकी आभा, उनकी चमक फीकी पड़ी। वो नेहरूवादी समाजवादी पूरी व्यवस्था को ध्वस्त करने की वजह से इस देश में चमक रहे हैं वित्त मंत्री के तौर पर, वही उनकी पहचान। Shahid Siddiqui, do you agree with this critique of Dr. Singh as the Prime Minister? You know, people called him weak, silent. Look, I was a critic of Manmohan Singh as Prime Minister. I was in Samajwadi Party at that time. I was one of those who bitterly, vehemently opposed his nuclear deal because I thought that it was not in the national interest. But I will not agree with the criticism which has come to him. Nobody is perfect. Nobody is 100%. In history, there is no one ever who cannot be criticized. You can always criticize, but when you are looking at a person, you have to look at the whole and you have to look at the contribution. And I'll say he was one of the finest prime ministers. He was able, India did not grow only from 91 to 96. India grew much more during his time from 2004 to 2010. India did very well. When the world was facing a economic crisis, world was in difficulty, India was not, and the world looked at him. Barack Obama and others, they used to look at him and ask him for suggestions because he was able to take India in a situation that's the point. You're talking about Barack Obama. Going down. Look at the irony here.
And it is so profound and stark. Stark is, the right word. That on one side, you have a man who's been consulted by Barack Obama. And look how he's treated by his own party. He's undermined on a daily basis. Is that not a right assessment? Did that happen? Now let me come to that. Let me come to that. Let me come to that. I'm not here to defend the party or anybody. He was denounced by the media as well, which was unjust denouncement by the media. He was attacked by us and by every one of us. I think it was not justly done to him. He allowed it. He did not, and he did not challenge. His weakness was that he did not challenge his critics, whether in the party or outside the party. His problem was that he was a lame duck prime minister in his second term. In the second term, everybody knew that he will not be there in the third term because of his age, because of various factors, and that is where the coalition parties started defying him. Even in the Congress party, leaders started defying him, and he did not assert himself. That is where his weakness was, because I knew him I worked with him in various committees. It is right that he put his point of view, but then he did not assert. If you didn't agree with him, he will go along with you. He was flexible. He was not firm. The only stage where he was very firm was on the nuclear deal. And I was very surprised because that was not the style of Manmohan Singh. Manmohan Singh did not put everything at stake for his views, because he was not a firmly ideological man. And on nuclear deal, where I believe that it was not in the country's interest, energy security was not coming from this 1, 2, 3 nuclear agreement. That's a separate debate. We are only talking about the man, his personalities, his policies. We can have that discussion on some separate occasion, like Dr. Ranganathan said. Doctor, I get the point. As a man, he was honest. He was absolutely one of the most honest politicians we have seen. Right. And having that kind of power. Right. In spite of everything, if you can be honest and remain honest all through in this 30, 40 years of your life, then it is a big achievement. That's right. Tells you about the character of the man. But Dr. Ranganathan, the question is, like I asked you in the beginning, how will history judge him? Will history be kind? Was the Congress party kind enough to Dr. Manmohan Singh? Because this comes up often. Did the Congress use Dr. Manmohan Singh, reward him? How would you describe it? I think it worked both ways, to be honest, and I think it almost always does. But talking about history being kind, it was that rogue Churchill who said, history will be kind to me because I'll write much of it myself. Of course, Dr. Manmohan Singh did not do any such thing, but let me be honest. And how would I like to remember him? Let me be as of that. I would like to only remember him as a brilliant scholar and an academic, as a very fine gentleman, as an astute reader of economics, and someone who helped, one of the people who helped India come out of this economic black hole. I would like to remember him as that, because let me be very honest out here. Let's not forget, as I said, yes, pure gold, but malleable. How would you like to be remembered as a deputy or a helper or a minister or an advisor of a dictator? Would that be glowing in your CV? Everyone on the panel, including you, Pranesh, would say no. But the fact remains, when the nation was thrown into this dungeons of emergency, when thousands were being forcibly sterilized and killed, and oppression, and Supreme Court was, kicked about, and there were no laws, Dr. Manmohan Singh was the chief economic advisor of Indira Gandhi. He did not protest the emergency at all. So would that be seen as a glowing, thing of him? I would, as I said, I would like to remember him as a brilliant scholar. I want to stop at that. I just want to add, one thing that you said, that he was the chief economic advisor, didn't protest. Many argue he could have resigned in protest, all of that. But he did, Dr. Ranganathan, and I hope you agree with me when I say this, that
for the 1984 Sikh massacre. He showed courage of conviction and said, look, jo hua, wo galat hua, and he apologized on behalf of the party. So, there was the man. These things can happen. Like you said, no one is perfect. अग्निहोत्री जी, मैं आपसे, शाहिद जी, आई एम कमिंग टू यू, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, मैंने शाहिद भाई को भी ये सवाल पूछा कि हम कह रहे हैं कि एक तरफ बराक ओबामा उनसे कंसल्ट करते थे, वो इतने बड़े स्कॉलर थे, लेकिन उनका जिस तरह से ट्रीटमेंट हुआ, उस पार्टी में कोई आके बोल रहा है कि हम ऐसे कर देंगे, वो कर देंगे, गलत डिसीजन, एक बोलते थे कि एक रिमोट कंट्रोल, ऑल ऑफ दैट, आपको पता है क्या है? नहीं, देखिए, मैं इस थ्योरी से सहमत नहीं हूं कि वो कोई रबर स्टैम्प प्राइम मिनिस्टर थे। बहुत सारे ऐसे फैसले हैं जो उन्होंने अपने हिसाब से लिए और जिन पर उन्होंने सोनिया गांधी को तैयार किया। न्यूक्लियर डील उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। अमेरिका के साथ, यूएस के साथ जो डिफेंस डील थी, वो उसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। कई पद्म सम्मान देना था एक एनआरआई को, उसमें सोनिया गांधी तैयार नहीं थी, उन्होंने दिया। एक सज्जन को प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशन से राज्यसभा में लाना था, सोनिया गांधी किसी और को लाना चाहती थी, मनमोहन सिंह लाए। सीबीआई डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट के मामले में मनमोहन सिंह की चली। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं। तो ये तो कहना कि वो रबर स्टैम्प थे या वो थे, आई डोंट एग्री विद, आई डोंट बाय दिस आर्गुमेंट। ठीक है, वो कोऑर्डिनेशन से चल रहे थे, क्योंकि बहुत लोग सोच रहे थे, काफी लोग जो प्राइम मिनिस्टर बने थे, कि नरसिम्हा राव साबित हो जाएंगे सोनिया गांधी के लिए, और बहुत दिनों तक इंतजार करते रहे कांग्रेस में भी लोग और कांग्रेस के बाहर भी, बीजेपी में भी, कि मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी में झगड़ा हो और उसके बाद ही सरकार गिरे। उन्होंने 10 साल सरकार चलाई, तो कई बार आपको थोड़ा आगे पीछे भी होना पड़ता है, वो उन्होंने किया। दैट वाज द, एक वाजपेयी जी के फॉर्मर मिनिस्टर ने मुझसे कहा था, जब सरकार बनी, उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह इस सरकार को चला लेंगे, क्योंकि उनके ऊपर प्रधानमंत्री की कुर्सी की गर्मी नहीं चढ़ेगी, जो उनकी पर्सनालिटी है। वरना प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठते ही आदमी जो है उसका रुख बदल जाता है। तो वो रही बात पार्टी की, तो पार्टी ने उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया भाई। पार्टी ने, आज भी पार्टी उनके साथ खड़ी हुई है। पार्टी ने क्या, कुछ नेताओं ने किया होगा मिसबिहेव। राहुल गांधी ने फाड़ा था वो ऑर्डिनेंस जिसपे वो आहत हुए थे, उन्होंने उस पर रिएक्ट नहीं किया। उसके बाद आके बात हुई, बाद में राहुल गांधी उन्हें अपना मेंटर मान रहे हैं उनको आज की तारीख में। तो अब ये कहना कि पार्टी आडवाणी जी है, मान लीजिए, तो क्या आडवाणी जी के साथ बीजेपी नहीं है क्या? तो ये, इसलिए मैं इस थ्योरी को बाई नहीं करता हूं। मनमोहन सिंह को मैं एक अच्छे अर्थशास्त्री और अच्छे राजनेता के रूप में याद करता हूं, और वो पॉलिटिक्स जानते थे, पॉलिटिक्स समझते थे। वो पॉलिटिक्स की जो क्रिकेटनेस है उससे अलग रहते थे, लेकिन उन्हें मालूम था कि सरवाइव कैसे करना है। और जो हर्षवर्धन जी ने एक बात कही कि वो यसमैन थे, आप उसे यसमैन भी कह सकते हैं, लेकिन वो अपने बॉस, जो भी उनका इमीडिएट बॉस होता था, उसका विश्वास जीतते थे, उसका भरोसा जीतते थे। और इसीलिए वो जब प्रणब मुखर्जी के अंडर में आरबीआई गवर्नर थे, उनका विश्वास जीता। जब नरसिम्हा राव के फाइनेंस मिनिस्टर थे, तब विश्वास जीता। जब सोनिया गांधी के वो पार्टी में लीडर थी, तब उनका विश्वास जीता। नहीं, आपकी ये बात ठीक है, लेकिन ये तो एक पहलू है। लेकिन जब आप इतने बड़े पद पे होते हैं, तो आपको विश्वास तो जनता का जीतना होता है। नहीं, जनता का विश्वास उन्होंने कहा नहीं जीता। उन्होंने जनता के लिए जो योजनाएं ली, जो उन्होंने, भाई आज हर चीज का आप सोनिया गांधी को श्रेय देंगे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर तो मनमोहन सिंह थे ना। आरटीआई एक्ट अगर लाया, आरटीई एक्ट लाए, राइट टू फूड, जिसपे आज 80 करोड़ लोगों को आप खाना दे रहे हैं, वो उसी के तहत हुआ। तो अब मान लीजिए मोदी जी ने 370 हटाया, लेकिन तो जनसंघ का एजेंडा जनसंघ के जमाने से था, तो क्या कह दिया जाएगा आरएसएस ने हटाया तो मोदी जी ने, क्रेडिट उनको मिलेगा। तो इसलिए प्राइम मिनिस्टर जो होता है, क्रेडिट एंड डिस्क्रेडिट दोनों उसके ही होते हैं। हर्षवर्धन जी, नहीं, देखिए, एक तो एक विनोद जी की बात से मैं सहमत हूं, क्रेडिट डिस्क्रेडिट उसी को मिलता है। लेकिन जब पीवी नरसिम्हा राव ने बजट पेश करने के लिए कहा था और वो सुधार थे, तो उन्होंने कहा था कि अगर सफल हो गया तो हम दोनों का श्रेय होगा, असफल हो गए तो सिर्फ आपका श्रेय होगा। लेकिन यहां तो उलट हुआ। यहां तो भारत के लोकतंत्र को कुचल कर एक एनएसी बनाई गई थी, तो तुलना नहीं हो सकती। सोनिया गांधी किसी संवैधानिक पद पर नहीं थी। एनएसी कोई संवैधानिक संस्था थोड़ी थी, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थोड़ी थी। और उसमें जो लोग एनएसी मेंबर होते थे, खैर छोड़ देते, वो चर्चा इतर चली जाएगी। लेकिन वो फैसले जानबूझकर इस तरह से किए गए कि सब सोनिया जी ही करती हैं। ये कोई मीडिया ने छवि नहीं बनाई। मीडिया को हर बात में खलनायक बनाना बहुत उचित नहीं होता है, क्योंकि कोई मीडिया थोड़ी तैयार कर रहा था। अब दूसरी बात, सोचिए, जिन मनमोहन सिंह जी को हम लोग याद कर रहे हैं कि उन्होंने देश में संभावनाओं के द्वार खोल दिए, और मैं ये कह रहा हूं वो व्यक्ति अद्भुत था, वो नहीं होता तो आज हमारा देश नेहरूवियन सोशलिस्ट इकोनॉमिक पॉलिसी के फ्रेमवर्क में दबा हुआ सांस घुट गई होती उसकी। और उनके आने से पहले 3 to 4% इकोनॉमिक ग्रोथ को हिंदू ग्रोथ रेट कहकर हिंदुओं को अपमानित किया जाता था।
मनमोहन सिंह ने वो सपना दिखाया कि 10% की मनमोहिनी विकास दर हम करते। लेकिन सोचिए, राहुल गांधी आज सभी अखबारों में छपा हुआ है, इकोनॉमिक टाइम्स में भी छपा हुआ है कि वो हमारे मेंटोर और गाइड थे। कमाल के मेंटोर और गाइड थे। इस देश में अंबानियों अडानियों की कतार लगाने वाले मनमोहन सिंह की पॉलिसी है, और राहुल गांधी दिन रात उद्योगपतियों को गाली देने के अलावा यह आदमी कुछ काम नहीं करता है। ये नेता प्रतिपक्ष हैं और ये ऐसे बात करते हैं जिसे समझ में नहीं आता, टी शर्ट पहनकर सदन में आ जाते हैं। आज ये सब चर्चा का दिन नहीं है, लेकिन आप जरा सोचिए कैसे कांग्रेस पार्टी उनको देखती है। ये जरा आप सोचिए, इकोनॉमिक एंगल से आज क्या राहुल गांधी ने कोई भी उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी को आगे बढ़ाने की बात की? क्या प्रधानमंत्री के तौर पर जो काम अटल जी ने नहीं छोड़ा, अटल जी ने, आप उसको देखिए, कॉपी पेस्ट है जो मनमोहन सिंह की सरकार में हुआ, पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन, वही कॉपी पेस्ट है। उसी को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई डिग्री आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन 10 साल में वो वैक्यूम क्यों आ गया? क्यों सारी पॉलिसी फिर से शीर्षासन करा दी गई? यह सवाल भी पूछा जाना चाहिए। मनमोहन सिंह शानदार व्यक्ति थे, शानदार अर्थशास्त्री थे, लेकिन उनकी छवि को अगर किसी ने खराब किया तो कांग्रेस पार्टी ने, गांधी परिवार। शाहिद सिद्दीकी। देखिए, ये तो मौका नहीं है उन पे इस तरह से आरोप लगाने का, और मैं नहीं समझता कि कांग्रेस पार्टी ने उनकी छवि को खराब किया है। कांग्रेस पार्टी ने उनको पूरा मौका दिया, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी थे, जब वो 24 पार्टियों को साथ लेकर चलते हैं आप, तो आपको कंप्रोमाइजेस करने पड़ते हैं, आपको सबको साथ लेने के लिए जो है एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं, आप अपनी मनमानी नहीं कर सकते। तो वही बात मनमोहन सिंह की भी थी कि उन्हें एडजस्टमेंट करने पड़े। पहले फेज में लेफ्ट फ्रंट का उनके ऊपर काफी दबाव था, उसको लेकर चलना उनकी जरूरत थी, उनकी मजबूरी थी, उन्हें लेके चलना था। उस पे उनका सिर्फ सोनिया गांधी पे इल्जाम लगा देना मैं समझता हूं कि दुरुस्त नहीं है। लेफ्ट फ्रंट के साथ उनको जिस तरह से लेके चलना पड़ा, उसके बावजूद इंडिया की ग्रोथ तो नहीं रुकी। अगर 2004 से डिबेट नहीं है, we'll have, you know, everybody on the panel agrees that this is not the right occasion to talk about all of, you know, those things. We will have more time in the future, hopefully, to discuss things threadbare. I thank some of you for joining us on debate number 1.